Now we shift our focus to Maximum City, Mumbai, where the MMRDA has constituted a special intensive safety inspection team. Well, that's what it's being called. This comes following the tragic incident near the Mulund Metro Line 4, where a parapet slab collapsed, leaving 4 persons injured and 1 dead. Now, the Mumbai Metropolitan Regional Development Authority, or the MMRDA here, has constituted a high-level committee to conduct a comprehensive safety review. Now, in the aftermath of the incident, the MMRDA, the authority, has formed a special intensive safety inspection team to allegedly thoroughly examine the work completed so far on the Metro Line 4. Now, the same Metro Line from where that pillar fell on commuters, resulting in injuries to multiple commuters and, in fact, the tragic passing away of one of those commuters. The same visuals you see there on your screens. Now, this committee in question has been directed to carry out an extensive inspection of the entire stretch within the next 4 days. Very importantly here, within the next 92 hours, the committee has in fact been instructed to carry out an extensive inspection of the entire stretch. Now, it will identify, what will this committee do? Well, it will identify any deficiencies or technical lapses in the project on this Metro Line 4 in Mulund, where that tragic incident of a slab falling on commuters took place, which also resulted in the death of 1 commuter. Now, meanwhile, this agency or this committee that has been set up by the MMRDA following that tragedy will go into the details of this tragic incident and prepare a report, or rather furnish a report in the next 4 days. Meanwhile, 1 person was killed and 3 others injured after a portion of an under-construction metro pillar collapsed in Mumbai's Mulund on Saturday afternoon. Now, this raises fresh questions over civic safety and oversight in the Maximum City, India's financial capital. Nonetheless, now, according to the Mumbai Metropolitan Regional Development Authority, or the MMRDA, about whom we were just talking, a section of the parapet fell from a height onto a passing auto rickshaw, while a nearby car was also crushed, pointing to what many are now calling blatant civic apathy at high-risk construction sites. That's right. Now, the MMRDA has now imposed a 6 crore fee in penalties on the contractor and the supervision firms involved, promising stringent action. Meanwhile, Chief Minister Devendra Fadnavis has also ordered what he calls a high-level probe, announcing a 5 lakh compensation for the deceased family and full medical coverage for the injured. Now, the tragedy has sparked a political storm, with Varsha Gaikwad and Anand Dubey alleging administrative negligence. Not only this, they're allegedly calling the incident a murder and not an accident, and also accusing the government of a massive cover-up. Meanwhile, the deceased has been identified as Ramadhan Yadav, a prominent local Samajwadi Party leader. 5 project managers have been arrested, a senior executive engineer suspended, and, well, work at the Mulund site halted as the probe continues. We get you some reactions. Heads must roll. We need transparent, accountable practices. If there is a shoddy contractor who has not done his job, he needs to be blacklisted. And as Adanya Devendra Fadnavis, the Chief Minister, and my own leader, Eknathji Shinde, have asked for this probe, they have also announced 5 lakh rupees for the family. It's not a question of money. The deceased and, can never be compensated. But having said that, if we look at the Mulund incident, we need to learn from this, because if construction sites collapse, then it results in death and this kind of a tragic situation. मेट्रो के काम में, निर्माणाधीन काम में एक हिस्सा गिरता है, 3 लोग घायल हो जाते हैं, 1 व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसका जिम्मेदार कौन है? ठेकेदार है कि कंसल्टेंटिंग कंपनी है कि उसमें काम करने वाले इंजीनियर्स हैं कि डिपार्टमेंट है कि सरकार है कि प्रधानमंत्री कार्यालय? कौन है? कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन जवाबदेही लेगा? कैसे सजा होगी? कोई दंड लगा दे रहा है, कोई मुआवजा घोषित कर दे रहा है, उससे क्या जाने वापस आएंगी? कहीं आप ब्रिज का कुछ अलग ढंग से डिजाइन कर दे रहे हैं, कहीं निर्माणाधीन मेट्रो का पिलर गिर जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है भाई? मेट्रो के गर्डर के बारे में जो इंसिडेंट हुआ, उसमें 4 जन यहाँ पे इंजर्ड हो गए, जिसमें 1 जन एक्सपायर हुआ है। पूरी इंक्वायरी बैठेगी अभी,
इसका पूरा ऑडिट होगा। सीएम साहब पूरे इसके ऊपर ध्यान रखे, पूरी मिनट टू मिनट की इंफॉर्मेशन हमारे आमदार मीर भाई उनके पास से ले रहे और यहाँ उनकी पूरी नजर यहाँ पे है। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कंसल्टेंट कौन था, कौन साइट इंजीनियर था, किसको काम दिया था, और जो भी इसमें दोषी है उसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी। दिस इज अनएक्सेप्टेबल इन अ सिटी लाइक मुंबई। आप कैसे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हो? MMRDA must be held accountable. Mumbai Metro Rail Corporation must be held accountable. The Tata and China Harbour JV, which is responsible for this construction, must be held accountable. और जो कोई officials है, उनके खिलाफ culpable homicide का चार्ज लाना जरूरी है। अगर सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो हम रास्ते पर उतर जाएंगे। आज चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी 5 लाख कॉम्पनसेशन अनाउंस करते हैं। इज दैट इनफ? इज 5 lakhs इनफ? इज दैट व्हाट द गवर्नमेंट थिंक्स अ ह्यूमन लाइफ इज वर्थ? ऐसी चीजें मुंबई में हो कैसे सकती है? इसके गिरने का जो प्राथमिक कारण जो यहाँ पे समझ में आ रहा है, उसमें जो कंक्रीट की स्टिचिंग है वो ना होना या फास्टनिंग जो होती है, उस फास्टनिंग में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, ऐसा दिख रहा है। तुम्हें ऐसा खबरदारी एक इमीडिएट एक्शन के तौर पे MMRDA ने जो इस लाइन के जो कॉन्ट्रैक्टर है जो कर रहे हैं काम, वो मिलन इंफ्रा है, उनके ऊपर 5 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। और जो इस काम को देखरेख करने की जिम्मेदारी जिन जनरल कंसल्टेंट को है, LBG और हिल, उनके ऊपर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है।